Hello friends, in this video lecture we will be discussing a topic contract with minor. Contract with minor. What is the status of contract with minor as per Indian Contract Act? Okay, so we will be discussing the topic contract with minor. तो सबसे पहले minor होता कौन है? So minor is a person who has not reached the age of majority. मतलब वो 18 years reach नहीं किया and he is less than 18 years of age. So that person is minor. उसके बाद सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड बाय द पार्टीज विच आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो सेक्शन 10 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं दो लोगों के बीच में हो सकता है, उन्हीं दो पार्टीज के बीच में हो सकता है विच आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. और कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो सेक्शन 11 में है, दैट द पर्सन शुड बी अ मेजर. टू बिकम कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन शुड बी अ मेजर, दैट मीन्स उसको माइनर नहीं होना है. सेकेंडली, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, उसको अनसाउंड माइंड का नहीं होना है. एंड थर्डली, ही शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ. ओके, he should not be disqualified from contracting by any law. तो सेक्शन 11 के हिसाब से इफ अ पर्सन इज अ माइनर देन ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो सेक्शन 10 ये तो बता देता है, सेक्शन 10 एंड 11 ये तो बता देता है कि द पर्सन दैट द माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बट सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ये नहीं बता पाता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वेदर इट विल बी वॉइडेबल और इट विल बी वॉइड. ओके, तो voidable का मतलब है whether it can be revoked by one of the parties who is then aggrieved party, or whether it is void, it is unenforceable by law and both the parties cannot enforce it. Okay, in case of voidable contract the party who is an aggrieved one can enforce the contract. ठीक है, तो void और voidable का जो difference हमने किया हुआ है. So this thing, that whether the contract with a minor is voidable or void, was discussed in the case Mohidi Bibi versus Dharamdas Ghosh. Okay, so it was held in this case that the contract with minor is void ab initio. स्टार्टिंग से ही इसका लॉ के आइस में कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, दैट देयर वाज अ पर्सन धर्मदास घोष हु वाज अ माइनर. सो ही टुक सम लोन एंड ही मॉर्गेज द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ मिस्टर ब्रह्मो दत्त. उसने ब्रह्मो दत्त से लोन लिया और उसने अपनी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी कि इनकेस वो लोन ना चुका पाए देन ही कैन recover from the property. So now this Mr. Brahmo Dutt was knowing that Dharamdas Ghosh is a minor. So since he was knowing that Dharamdas Ghosh is a minor, then also he entered into the contract. Okay. So later on, this minor was not able to give back the money. So Mr. Brahmo Dutt thought to dispose the property. The minor filed the suit stating that since he is a minor, therefore the contract is void ab initio, and therefore there is no value of the mortgage and the property should be restored back to him. Okay, so in this case the court said that yes, the contract with minor is void ab initio since Mr. Brahmo Dutt was knowing that the plaintiff was a minor, so he should not have entered with with a minor into a contract. तो ये देखिए ये क्यों किया गया, माइनर को इतनी बेनिफिट क्यों दी गई यहाँ पे? कहीं ना कहीं माइनर ने लोन लिया है एंड ही वाज नॉट एबल टू पे बैक द लोन एंड द defendant Mr. Brahmo Dutt was having a rightful right to dispose the property to recover his money, but then also court did not allow him. ये किया गया है to benefit the minor, to protect the minor, because the law will assume that a minor do not have a proper judgment that he can think for his own benefit. Okay, now if we see that a minor, it was discussed in Mohri Bibi case that a contract with a minor is void ab initio. Okay, void ab initio. Okay, and a minor cannot make a promise. Or ye, the same thing was held in Raj Rani case that a minor cannot make a promise enforceable in law. ठीक है, minor cannot make a promise which is enforceable in law. ठीक है. Similarly, the specific performance of a contract with a minor is not possible at all. तो अगर माइनर साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड इफ माइनर इज नॉट परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन देन द कोर्ट कैन नॉट obligate him to perform his part of the obligation. Therefore, specific performance is not possible in case of a minor because contract is void ab initio. Okay, the court will not do anything
so as to enforce the contract. Okay, in this case, if the court would have allowed Mr. Brahmodar to dispose the mortgage, then in a way it was making the contract enforceable, and a contract with a minor is unenforceable. Okay, it is void ab initio. तो इसका रैशनल क्या है कि द माइनर हैज अ पुअर जजमेंट, द लॉ विल एक्ट एज अ गार्जियन, द लॉ विल प्रोटेक्ट द इग्नोरेंस एंड इमेच्योरिटी ऑफ द माइनर. ठीक है. अब लेकिन अगर माइनर के बिहाफ में इफ पेरेंट्स or guardian will make the contract for the benefit of minor, okay, then such contract can be specifically enforced. ठीक है. If parents or guardian will make a contract for the benefit of minor, then such contract can be specifically enforced. Okay, ये point important. It was held in S Subramaniam versus KS Rao case. Okay, that if parents and guardian can make contract for the benefit of minor, then such contract can be specifically enforced. और जो rationale दिया माइनर को बेनिफिट देने का कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट void ab initio होगा, even though the minor has unjustly enriched himself, that is because the law will protect the minor because their mental faculties are not that developed or matured. Okay, अब इसमें देखिए तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. इस पे हम लोग आएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी दैट देयर इज नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर. इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ स्टॉपल क्या होता है? रूल ऑफ स्टॉपल का मतलब होता है, इट इज द रूल ऑफ स्टॉपल इज गिवन इन सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. एविडेंस एक्ट में ये गिवन है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन one person by his act or declaration, okay, he makes another person believe that a particular thing is true, then later on he cannot deny the truth of that thing. अब इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें, फॉर एग्जांपल ए है एंड बी है, देयर इज अ कार and there is C. Now C is the owner of the car, but in front of C, A says B that I am the owner of the car and I will sell you this car for rupees 5 lakh, and C is silent, Okay. uh, Later on, C thought that A is boasting about himself, so but he was silent. He did not made B clarify that A is not the owner and C is the owner. Okay, so somewhat his silence made B believe that A is the owner of the car. Now, if A sold this car to B, then later on C cannot say that I was the real owner and how come A can sold the car. Okay, why? Because C made B believe a particular thing, that A is the owner of the car. Now later on C cannot deny that truth. So that is the law of or the rule of stopple given under section 115 of the एविडेंस एक्ट. अब आप ये बताइए स्टॉपल इस पे कैसे लगेगा? मान लीजिए एक माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये बताता है कि ही इज अ मेजर एंड देन ही फ्रॉडुलेंटली एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, and then after entering into a contract, let's say A is a minor and he fraudulently enters into contract with B. Okay, and he says that I'm a major, and later on when the time of performing his part of the obligation comes, he says he takes the plea of minority. Okay, then as per section 115 or as per rule of stoppel, he will be stopped to take the plea of minority, because once he said that he's a major, then he cannot deny that rule. But the thing is, this rule of stoppel will not apply against minor, okay, so that level of protection is being given to the minor. So now it is in Sadiq Ali Khan versus Jai Kishore, it is well settled that there is no stopple against minor even if he has acted fraudulently. So the minor is not stopped from setting up the defense of minority. तो अगर उसने उस समय बोला था कि आई एम मेजर और उसने फ्रॉडुलेंटली एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, लेटर ऑन ही इज नॉट स्टॉप्ड from taking the defense of minority, so he can take the defense of minority. So why this has been done? Because you see the law of stopper is a procedural rule, and the protection of minor, the incompetency of party, is a substantive law. So a procedural rule cannot overrule the substantive law. Okay,
Now the second point is that the no liability in tort arising out of contract. अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में एक टॉट या उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक टॉट अराइज होता है, देन it cannot be it cannot be framed against the minor. Such tort cannot be framed against the minor. But हाँ, tort in general, a minor is liable for the tort in general. Tort का मतलब क्या होता है? Civil wrong, like nuisance. Okay, so many there are things of tort. Trespass. Okay, so a tort minor is generally liable for a tort, but if he is doing a civil wrong, he will be liable. But if such civil wrong is arising out of a contract, then he won't be liable. Okay. अब आप इसमें एक केस देखिए, दो केस है, बर्नेट वर्सेस हैगिस. ओके, इन दिस केस व्हाट हैपेंड, अ माइनर बोरोड अ मेयर फॉर राइडिंग एंड नॉट फॉर जंपिंग. जिसने बेचा था उसने बोला था उसको जंपिंग के लिए मत देना, बट द माइनर गेव दिस मेयर टू हिज फ्रेंड हु जम्प्ड इट एंड किल्ड इट. उसने उस मेयर को मार दिया, बिकॉज उसने जो ओनर ने मना किया था दैट इट इज ओनली फॉर राइडिंग एंड नॉट फॉर जंपिंग, बट ही जम्प्ड एंड मेड द मेयर किल्ड. So it was held that the minor will be liable. Why? Because jumping was not the part of the contract. Okay, so there is a tort which is not arising out of a contract. Okay, so therefore the minor will be liable for the tort of making the mare jump. Okay, liable for tort. Okay, why? Because this tort is not associated with the contract. The contract was only for the riding of the mare, not for jumping of the mare. Okay, now the second case is Jennings versus Rundell. In this also, an infant hired a horse to be ridden for a short journey and took it for a longer journey. As a result of it, the horse was injured. So the thing is, here the horse was taken for riding, but the minor took it for the long journey. But this riding is associated with the contract, therefore the minor will not be liable. पहले वाले केस में riding was okay, but jumping was not included in the contract, and therefore the minor was held to be liable. But in the second case, the minor took it for riding, and while riding he took it to the long journey, and therefore the horse got injured. So since the riding was the part of the contract, so there was a tort, there is a civil wrong that the horse was injured, but that arised out of a contract of riding. So since it arises out of the contract of riding, then there will be no liability of the minor. So minor will have no liability in case a tort is arising out of contract. Okay. Now the third important point is doctrine of restitution. This is the most important thing, very important point, very important point. Okay, so this is related with unjust enrichment. ओके, अब देखिए, अगर माइनर ने फ्रॉडुलेंटली किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया शोइंग दैट ही इज अ मेजर एंड ही टुक अ प्रॉपर्टी, लेट से माइनर ने, ए माइनर है, उसने बोला कि मैं मेजर हूं, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा फॉर ₹5 लाख, एंड देन ही टेक्स द कार ऑफ बी. वो कार ले लेता है लेकिन पैसे नहीं देता है, और बोलता है कि मैं तो माइनर हूँ, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं, है ना. तो बात तो सही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, बट द इक्विटी, द जस्टिस डिमांड्स दैट एटलीस्ट द गुड्स विच ही हैज टेकन should be restored back. Okay, so this is what doctrine of restitution is all about. अगर आप माइनर हैं तो माइनर के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो ही कैन कीप द कार ऑल्सो, कि कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था. बट नो, द इक्विटी एंड जस्टिस डिमांड्स दैट इफ माइनर हैज अनजस्टली इनरिच्ड हिमसेल्फ, देन ही हैज टू रिस्टोर बैक द प्रॉपर्टी. अब अगर इस केस में बी को पता होता कि ये माइनर है और उसके बाद बी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता, देन द माइनर could have taken the car also, क्योंकि law is protecting the minor a lot. Okay, so so in this case the equity demands that the goods should be restored back. Why? Because minor fraudulently said that he is a major and then he made B entered into the contract. Okay, so
this doctrine of restitution is based on principle of unjust enrichment, that one cannot take wrong of his own wrong. Okay, one cannot take benefit of his own wrong. So doctrine of unjust enrichment states that a minor cannot take benefit of his own wrong. ठीक है, तो ये इन शॉर्ट है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें रिस्टोर बैक हो सकती है ये हमें देखना है. सो इक्विटी विल डिमांड दैट द गुड्स विच द माइनर हैज टेकन fraudulently it should be at least restored back. Okay, तो अब देखिए इंग्लिश लॉ के हिसाब से एक केस था लेस्ली वर्सेस शियल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, लेस्ली वर्सेस शियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. सो इस केस के हिसाब से इफ a minor has obtained property or any goods by fraudulently misrepresenting his age, ठीक है, then he is compelled to restore such good if he has not sold it. Okay, if he has not sold it. तो अगर a माइनर है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसने फ्रॉडुलेंटली अपना एज रिप्रेजेंट करके b से कार ले ली. ओके, अब कार ले ली or then he's not giving the 5 lakh to B, and he's saying that since the contract is void ab initio, so I will take up the car. So that he cannot do. As per the English law, the good should be restored back to B. अब मान लीजिए the second case is when the goods are sold. अब मान लीजिए उसने कार बी से ली और पैसे दिए नहीं और कार को बेच दिया. ठीक है, कार को बेच दिया. Then the cash which the minor got cannot be restored, cannot be restored to the B, क्योंकि कैश इज नॉट ट्रेसेबल. कैश इज नॉट ट्रेसेबल. ठीक है, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी बी से ली, कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई गुड्स बी से लिया, लेट से कार एक बी से लिया और कॉन्ट्रैक्ट था कि दैट माइनर विल बाय दिस कार फॉर ₹5 लाख. ठीक है, तो बी ने तो अब अपनी कार दे दी, अपनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी किया, लेकिन ए ने उसको पैसे नहीं दिए, है ना, और फिर माइनर ने वो कार लेके बेच भी दिया. नाउ बी कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम द माइनर, द मनी फ्रॉम द माइनर इफ दैट मनी इज नॉट ट्रेसेबल. ये एज पर इंग्लिश लॉ है, अभी इंडियन लॉ का नहीं बता रहा. तो ओनली अगर गुड्स लिया है और वो गुड्स बेचा नहीं है, वो अभी भी माइनर के पास है, देन ओनली दैट गुड्स कैन बी रिस्टोर्ड. एंड ऑल्सो दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन विल नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ कैश एज पर द इंग्लिश लॉ. कैश के बेसिस पे नहीं होगा. लेट से ए माइनर है, उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी, वही धर्मदास घोष वाला केस, अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी. ओके, और बी से कैश ले लिया 5 लाख रुपए और उसने सारे पैसे खर्च कर दिए. ठीक है, या उसके पास पैसे थे, देन दिस कैश कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू बी. ओके, this cash cannot be restored to be, because if you restore the cash, then in a way you are enforcing the contract itself. Okay, so therefore this cash cannot be restored to be. Okay, so this doctrine of restitution as per the English law will not apply in cases of cash. Okay, so this same rule was followed in India also, but the position got enlarged in Khan Gul versus Lakha case. Okay, in this case the court said that even the cash can be recovered. अगर minor ने उस cash को खर्चा नहीं किया, then cash can also be recovered. So Khan Gul versus Lakha is a very important case in which Indian law said that we are enlarging the view taken in the English law, or in the Leslie versus Shiel case, and we are enlarging the view and we are also including cash into it. If minor has fraudulently taken the cash, he has to restore the cash also. Okay, so this was a very big decision. Somewhat it in enlarged the view taken by taken in Leslie versus Shiel, because that was limited to goods and goods sold, but not to the cash. Okay, so in Khan Gul versus Lakha Singh, the court said that equity cannot allow minor to take advantage of his own fraud. Okay, doctrine of restitution. The court said in Khan Gul case that the doctrine of restitution covers the cases where cash has been obtained also. Okay, because the court said that there is no real difference between restoring the property and refunding the money. So the court said that there is no much difference between restoring the property and refunding the money, एक्सेप्ट दैट द कैश कैन नॉट बी ट्रेस्ड. अब मान लीजिए उसने कैश लिया और उसने सारे पैसे खर्चा कर दिए, बिकॉज पैसा है ही नहीं, देन यू कैन नॉट कंपेल. बट इफ ही इज हैविंग द कैश, और ये बात प्रूव्ड है, देन दैट कैश
can be recovered, can be restored. Okay, because one cannot be allowed to take benefit of his own wrong. Okay, so thus there is a greater scope of doctrine of restitution in case of in Indian scenario. Okay, but this rule was somewhat overruled in Ajudia Prasad versus Chandan Lal, in which the court said that cash cannot be recovered or cash cannot be restored. So somewhat it again followed the English law of Leslie versus Shield. Leslie versus Shield. So this controversy between these two cases in Indian law, the one which said that the cash can also be restored and doctrine of restitution will apply in cases of cash, and another which said that cash cannot be restored and doctrine of restitution will not apply on cash. So this was settled in section 33 of specific relief act in 1963, which favored the Khan Gul case. Khan Gul case. Okay, and it enlarged the scope of doctrine of restitution, and it said that doctrine of restitution will apply in cases of cash also, applies to cash also, applies to cash also. Okay, so specific relief acts clearly said that the minor can be compelled to give the cash if he has taken that fraudulently, और अगर उस कैश से वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको वो प्रॉपर्टी भी रिस्टोर करनी होगी, अगर वो कैश अपने एजुकेशन पे खर्चा करता है, एनीथिंग विच इज बेनिफिटिंग his state. Okay, anything which provides benefit to his state. Okay, anything which provides benefit to his state. Okay, so anything which is providing permanent benefit to his state, uh, the minor क्या हैज टू रिस्टोर दैट मनी. अगर वो अपने एजुकेशन पे खर्चा कर देता है या उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, देन ही हैज टू रिस्टोर दैट प्रॉपर्टी. अगर वो किसी से फ्रॉडुलेंटली कैश लेता है ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट ही इज अ मेजर, लोन ले लेता है एंड देन ही यूटिलाइज दैट मनी to buy a property or to spend on his education, then he has to return the money. Okay, so doctrine of restitution will apply in cases of cash. But if the minor takes the loan and he spends it, let's say, on watching films or on temporary items of luxuries. Okay, he goes for a trip. Okay, he watches film of that money, then he is not required to restore because that money cannot be traced. वो उसने पूरे खर्चा कर दिया है ना यहाँ वहाँ, है ना. So as per the settled rule is that doctrine of restitution will apply in cases of cash also, and cash can be restored to the party if that cash is traceable and if that cash has provided some permanent benefit to the state of the minor. ठीक है, अगर उसने उस कैश का कोई प्रॉपर्टी ले लिया या अपने एजुकेशन पे खर्चा किया, देन ही हैज टू रिटर्न इट. बट उसने यहाँ वहां खर्च कर दिया, देन ही डोंट नीड टू रिटर्न इट. सो दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. रेस्टिट्यूशन का मतलब to restitute, to compensate the person, okay, for that unjust enrichment. So if minor is fraudulently, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि द माइनर शुड फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट हिज एज. जो दूसरे पार्टी को पता नहीं होना चाहिए कि ही इज अ माइनर. अगर उसे पता था ही इज अ माइनर, देन ही कैन नॉट टेक बैक हिज गुड्स. ओके, बिकॉज लॉ इज प्रोटेक्टिंग द माइनर. बट अगर माइनर ने खुद ही गलती किया है, माइनर ने खुद ही अपना एज गलत बताया है और फिर कॉन्ट्रैक्ट में गया है, देन एटलीस्ट ही शुड रिस्टोर द गुड्स इफ ही हैज टेकन, and he should also restore the cash if that cash is traceable. Okay, so this doctrine of restitution will apply in the case of cash also in Indian scenario, that was settled in specific section 33 of specific relief act, which followed the Khan Gul versus Lakha Singh case. So this was all regarding the contract with a minor, that who is a minor, that the contract with a minor is void ab initio, that was discussed in Mohiri Bibi case. Okay, then what is the rationale? Then there is no stoppel against minor even though he has represented fraudulently that he is not a minor or he is a major, then later on he can deny that fact and he can take the defense of minority. Okay,
नो लाइबिलिटी इन टॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से टॉट अराइज होता है देन देयर विल बी नो लाइबिलिटी ऑफ माइनर, एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, सो थैंक यू ऑल.